is an algorithm. Okay. Again, so we are going to see this algorithm. Gradient descent is a general function or algorithm, you can say, or a way to minimize your cost function in linear regression. It is also actually used in other functions where we are minimizing it. Okay, gradient descent is simply a function for minimizing cost function in linear regression, and it is also used for minimizing other function in other methods, right? So it is actually uh, also used in other methods also. So in our case, what was the scenario that we want? This was our j theta, right? We have, and we want to minimize this j theta, because why? Because it's something which is called as squared mean error, right? Cost function हमारा squared mean error है. And till now we have seen hypothesis, the regression line. In that we have seen what is theta 0 and theta 1. So वो theta 0 theta 1 की वैल्यू हम कहीं से तो स्टार्ट करते हैं, right? We need to start somewhere. So to start that, to draw that perfect optimum line, the with minimum j of theta function, right? The minimum j function, the minimum cost function, where the cost function is minimum. If you want to draw, for that we want perfect theta 0 and theta 1, right? We want that theta. So let's say हमने theta 0 theta 1 0 0 से start किया. So we got some j function, right? So how you will be changing that theta 0 and theta 1 until you hopefully reach the minimum value of j theta. हमने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज किया, तब तक आप चेंज करोगे, लेकिन कैसे उसे चेंज करोगे, दैट इज व्हाट ग्रेडियंट डिसेंट इज. ओके, दैट इज व्हाट ग्रेडियंट डिसेंट इज. सो let's suppose this is the graph of j theta वर्सेस थीटा 0 एंड थीटा 1. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट? अगर आपको याद हो तो ये वाला फंक्शन, राइट? इफ आई बेटर, ये वाला फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट? और इवन दिस फंक्शन, ओके, j of theta. So similarly this is again that example of j of theta. So आप ये देख रहे हो, let's say कि this is a point, okay, this is a point. I hope you are able to see my cursor also. That this is a point where you have initialized your theta 0 and theta 1. Okay, so आप ये पॉइंट से थीटा 0 थीटा 1 की वैल्यू एक डायरेक्शन में चेंज करोगे तो आपको ये पॉइंट मिला. देन यू कैन सी द पाथ. Okay, so at the end you will reach, this is global minimum value, right? Global optimum value or global minima. Okay, usually the terminology is this is global minima. But there is one more issue. Okay, there is one more issue. Let's say कि this is a 3D graph. I hope you can visualize and you can see it. यहाँ पे theta 1 है, यहाँ पे theta 0 और up in height you are having your j theta 0 comma theta 1. तो आपने ये हिल देख रहे हो, तो हिल वो एरिया है जहाँ रेड पार्ट, दिस रेडिश पार्ट, it is where the value of the cost function is high. Okay, and this yellow part, sorry, this blue part, okay, जहाँ आपको थोड़े खड्डा जैसा दिख रहा होगा, even in the shapes you can see the value is minimum, right? So the value of j theta is minimum. So what you want exactly, you want that कि आपको ये मिनिमम वैल्यू मिले. तो आपने यहाँ पे हिल पे कहीं पे थीटा 0 थीटा 1 रैंडमली किया. सो you slowly reached here, you slowly start changing your theta 0 and theta 1 in that way कि आप ये पाथ से होते होते यहाँ तक ये मिनिमम वैल्यू तक पहुंचे. ओके, ये पाथ से होते होते यहाँ मिनिमम वैल्यू तक पहुंचे. ओके, सो नाउ सपोज कि मैंने ये जे थीटा, ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट पे किया था, राइट? आई होप यू कैन सी दी हाईलाइटेड पार्ट. ओके, ये पॉइंट पे मैंने किया था. अब उसकी जगह मैंने इस पॉइंट पे बिट राइट ऑफ दैट पॉइंट आई हैव डिक्लेयर्ड माय थीटा 0 एंड थीटा 1. वैसा कोई थीटा 0 थीटा 1 लिया कि मेरा कॉस्ट फंक्शन इस साइड है. एंड व्हाट विल हैपन, आई विल टेक दिस पाथ. So you can see there are two minimums in our graph. Okay, one is also minimum, but it is not a global minimum, right? मतलब पूरे ग्राफ का minimum value वो नहीं है. Okay, but what will happen that we will slowly gradually move in that way and we may fall in this local minimum. This kind of minimums are known as local minima. Okay, which is not, which is a minima of that plane, but it is not it is not the place where the cost function is minimum. There is still scope.
there is still scope of getting minimum cost function. but वो हम as we have selected theta 0 and theta 1 in such a way कि हम इस hill से हम इस direction में move हो रहे हैं, right? So that is what here happening. If you are not correlating the last lecture, then you won't be correlating this lecture also. Okay, so again, it is important because all are connected. All points, all the stuffs are connected here because we are still in linear regression. Okay, so this is what here happening here. Okay, this is what basically happening in this. Now what you need to do, okay, what you need to do, guys, this is the gradient descent algorithm. This is your basic gradient descent algorithm. uh, what we are actually doing that you can simply see theta j में हमने एक अल्फा है, अल्फा इंटू डेरिवेशन. आपको ये उल्टा सिक्स का सिंबल आपको पता होगा व्हाट इज दैट, राइट? दैट इज नथिंग बट सिंबल ऑफ पार्शियल डेरिवेशन. ओके, एंड देन जे थीटा थीटा जीरो. ओके, सो यू ऑलरेडी नो कि ये फंक्शन किसका है. ओके, यू ऑलरेडी नो दिस अबाउट दिस फंक्शन दैट जे थीटा जीरो थीटा वन इज फंक्शन ऑफ कॉस फंक्शन, राइट? वो कॉस फंक्शन है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव and then we are multiplying with alpha and then we are subtracting from the current theta. Okay, then we are subtracting it from the current theta. So actually what is happening, what is in this terminology that is important, this alpha which you are seeing here, okay, ये alpha जो आप यहाँ पे देख रहे हो, this is known as learning rate. Okay, this alpha is nothing but it represents the learning rate. We will see one by one that what it is, what is the difference between all this, what this theta j, you know the last theta j जो हमने वैल्यू हमने जो असाइन की थी वो. ओके, और उसमें हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, what we are subtracting it from that alpha into derivative of cost function. Okay, just a second, guys.
Okay, so we were discussing this gradient descent, right? So, what is this j theta, this function alpha? What is this derivation? We will understand, right? We will understand each and every sum. That alpha is learning rate. This is a learning rate, which we call it, and derivation. This partial derivation is something which we usually say slope to that point. Okay, तो इसको ये क्या है टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, बट हाउ वी आर अपडेटिंग इट, how we are updating it, we are updating in this manner. Let's say we found a cost function, मतलब वो हमारे पास कुछ error आया, squared mean error आया, we take the derivative and multiply the alpha, and then we subtract it from theta 0, and we save it in what, temporary 0. Okay, ये algorithm में हमने temporary 0 में क्यों save किया, because we also need to update theta 1. क्योंकि थीटा वन में भी हम जे थी कॉस्ट फंक्शन में से का हम डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव को अल्फा से मतलब लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके फिर थीटा वन में से माइनस करेंगे, and then we will save in then we will, using this temporary 0 and temporary 1, we will update our theta 0 and theta 1. Okay, so this is how your gradient descent algorithm works. This is how your gradient descent algorithm works, right? So let's see, जैसे मैंने अभी बोला कि ये डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव पार्ट है, और ये लर्निंग रेट है. ओके, अल्फा इज नथिंग बट योर लर्निंग रेट, एंड हियर एज वी वांट टू मिनिमाइज जे थीटा. ओके, हम ये जे थीटा को मिनिमाइज करना चाहते हैं, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली सिंपली taking the derivative of it, and then we are subtracting it from theta, then we are subtracting it from theta. So that is what we are doing. Okay, so what is exactly this j theta? This is what here we are given. Okay, so this is the function, right? यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से. So what is the slope, right? What is the derivative function? The derivative function is nothing but slope at that particular point. ये हमारा j theta function, हमने already ये डिजाइन देखी हुई है, right? When theta 0 is 0, right? और हमारे पास सिर्फ theta 1 है. So at that time we are getting single dimensional g cost function graph. Okay, there we are getting single dimensional cost function graph, and it looks something like that. So what is the derivation? Derivation is nothing but slope at that point. Okay, that is nothing but a slope at that point, or it may be on positive side, it may be on negative side. This is your that derivation. Okay, ये आपका सिर्फ एक derivation है कि वो slope हम ले रहे हैं, nothing but that slope. Okay, that tangential slope, or nothing else, right? So that is what we are taking, and when we are subtracting, you can see we are slowly moving down to the hill. Okay, we are slowly slowing. अगर हमारा theta 0 theta 1 is side, if you can see in the first figure, right, यहाँ पे कहीं allocated है. If it is you have selected theta 0 and theta 1 such a way that your j theta cost function lies here, then you will slow move towards the this global optimum. Okay, this minima level, global minima. Slowly you will move in here, and this loop will be positive slope, and this will be a positive number. Derivation will if you do this derivation of this point, it will be a positive number. And
exactly contrary of that. If you have taken in the below graph, if you can see कि अगर आपका इमेज अगर आपने थीटा जीरो थीटा वन इस तरीके से लिया है कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन हो इस lies at this point. Okay, if it is light at this point, the slope for that will be negative number. Okay, that means the derivation will be negative. The derivation will be negative. So what we are actually doing here, we are doing nothing, right? So we are doing here nothing, we are simply moving to down towards the hill. We are simply moving down towards the hill. So what this alpha is doing here, see, alpha is something which defines कि हम कितने steps है, okay, how much speed will be that we will be moving down to the hill, हम कितनी speed से करेंगे. If alpha is too small, so you can see in this image on the right side of the image, top image पे, okay, that we are taking very small steps. Okay, we are taking very small steps, baby steps, and it will be too long to reach global minimum. यहाँ पे guarantee कि हम पहुंच जाए global minima पे, but it will take too much time. Okay, and if it is too large, what will happen कि उसके steps इतने बड़े होंगे, that means subtraction to the theta 0 and theta 1 will so big that we will always miss this global minima. It will be fast, but we will always miss this global minima, और हम कभी global minima तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. हम कभी ये global minima तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. We will overshoot it. It may fail to converge into the global minima. Okay, it may converge. Okay, it will always overshoot the minimum level. ठीक है, और ये जो मिनिमम पॉइंट है उसको हमेशा ओवरशूट कर जाएगा अगर आपकी अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है. एंड नाउ वन मोर थिंग, दैट द रेंज ऑफ दिस अल्फा इज फ्रॉम 0 to 1. Okay, the range of this alpha is always from 0 to 1. Okay, so you can understand, say, that how important this is. That's why with this alpha is called learning rate. That's why this alpha is called learning rate, because on this is what this alpha defines, that what is your speed of learning. Okay, this alpha defines that what will be the speed of your learning, right? So this is how this alpha plays a great role. Okay, and we have discussed what that derivation is. ओके, सो लेट्स से हमने जो भी 3D ग्राफ देखा था उसको हम सिंगल डायमेंशन और 2 डायमेंशन में देखें. यू कैन सी दैट अवर थीटा वन इज एट दिस पॉइंट, एंड ये वाला पार्ट है, ये हमारा लोकल ग्लोबल मिनिमा है, बट दिस इज अगेन अ मिनिमम लेवल, राइट? यहाँ पे इतने पार्ट है, देखो, तो ये अगेन दिस इज अ मिनिमम लेवल, बट दिस इज अ लोकल ऑप्टिमम लेवल. ओके, ये लोकल ऑप्टिमा है, but it is not the global optima. It is not the minimum point where j theta can be reduced to. Okay, j theta का minimum point नहीं है, but when you reach here, you may fail, because अगर आप फिर थीटा 0 या थीटा 1 की वैल्यू चेंज करोगे, you can see that it is gradually increasing, और उसी डायरेक्शन में चेंज करते रहोगे एक पॉइंट तक, तब जाके शायद आप ये वैल्यू तक पहुंचो. ओके, ये ग्लोबल ऑप्टिमा तक पहुंचो. सो इट मे हैपन दैट यू मे नॉट कन्वर्ज ड्यू टू दिस लोकल ऑप्टिमा वैल्यूज. ओके, so this is what this slide means to say. Now, uh, till here we have seen what is the meaning of this particular differentiation. Okay, now one more important point, that when we जब भी हम ये कॉस्ट फंक्शन लगा के ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगा के हम थीटा 0 की थीटा 1 की वैल्यू ऐसे ला रहे हैं कि जहाँ पे कॉस्ट फंक्शन हमारा मिनिमम हो. ओके, द मिनिमम ऑप्टिमम लेवल of cost function, हम वहां तक पहुंच रहे. So in this complete process, the value of alpha never change. Okay, because the learning rate will be fixed, but though this step will be become smaller. अगर आप यहाँ देखो, okay, the purple line. Okay, so first of all, at this point, the derivation of that j theta function will be very high. So learning rate से multiply होगा और इतना बड़ा jump लगाएगा, this purple arrow. Okay, वो इतना बड़ा jump लगाएगा. Then yeah, at this point the j theta value will be decreased, so derivation of your j theta will also get very decreased. So you can see this green line, right? So the jump or the learning rate, the step towards the global optima level get decreased, and slowly so on, it is decreasing, and it becomes a baby step in front of the first step. Okay, so it will automatically decrease the j theta. This derivation value is automatically decreasing, hence automatically you are taking smaller and smaller stop.
smaller and smaller steps, right? So there is no need to decrease your alpha, okay, over time, because over time it is automatically decreasing the baby step. ओके, ओवर टाइम इट इज ऑलरेडी डिक्रीजिंग द वेब स्टेप। हाँ, लेकिन अल्फा फिर अगर आप इतना बड़ा रखो कि पहले स्टेप में वो ओवरशूट कर जाए ऑप्टिमम लेवल को, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट एन इशू, राइट? सो I hope you can understand what that alpha plays a role and what this J theta and that all that plays a role. Okay, so now when we talk about linear regression with one variable and gradient descent algorithm for one variable, this is how the algorithm would look like. This is how the algorithm look like. हमने अभी देखा वही, ओके। हियर यू कैन सी एट द राइट हैंड साइड लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। उस मॉडल में हमारे पास एक हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन दैट रिग्रेशन लाइन का फंक्शन, okay, that regression line which is separating or used to predict your data. Okay, and then we have seen cost function, that is this function is for linear regression model, and we are then applying gradient descent algorithm for that, which is to converge your thetas into minimum, or thetas into optimum number where your j theta is minimum, okay, where your cost function is minimum. सो हम जो ग्रेडियंट डिसीजन में हमने जो एक फॉर्मूला देखी उसे हमें रिपीट करते रहना until we converge into the minimum level, until we converge into the minimum level. So this is what we are doing, right? Linear regression versus gradient descent. This is what linear regression, और उसके अंदर हम gradient descent algorithm ऐसे हम use कर रहे हैं. So it is one of the most important algorithm till now. Okay, so any question till now anyone would like to ask? Yes, any question anyone would like to ask till now? No, sir. So this is what we just discussed, right? हमने जो भी डिस्कस किया है उसी के अलग अलग फॉर्मेशन में हमने अभी जो देखा है उसे लिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट साइमल्टेनियस अपडेशन। ये हमने जो देखा वो 3D ग्राफ देखा, मैंने वहीं पे बोल दिया कि दैट इज अवर लोकल मिनिमा, ये वाला जो एरो है ये पॉइंट है, ओके, वन इज अवर लोकल मिनिमा एंड दिस इज अवर ग्लोबल मिनिमा, ओके, दिस इज अवर ग्लोबल मिनिमा व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। सो ओके, सो यूजुअली हमारा जो थीटा फंक्शन जे थीटा फंक्शन है वो ऐसा नहीं दिखता है, बिकॉज विच व्हाट वी आर यूजिंग, वी हैव अंडरस्टूड द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कि उसमें इश्यूज क्या है, there may be issue of this thing, but when we are working with our linear regression, okay, the j theta cost function which we have selected, right, it is actually in a way that it never gives this kind of shape. It is always in this kind of shape, okay. It was below convex this is also known as this is always this bowl shaped function, okay. ये हमारा जो linear regression है, खासकर linear regression with one variable, it will be always in this step because our j theta is in such a way that it would not create that kind of difficult graph, okay. ऐसा कोई difficult graph नहीं create करता है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, because when we are linear regression with one variable, when we are talking about it, so वहाँ पे हमेशा हमको यही function है, hence there is only one local optima which is itself a global optima, okay. ग्लोबल ऑप्टिमा लोकल ऑप्टिमा एक ही है वहाँ, यहाँ पे है ही नहीं, so that kind of issue is not faced in linear regression with one variable, okay. We don't write हमको ये नहीं होता, और it is in a way convex function. I don't need to explain what is convex and concave, but it is known as convex function. You can see how that due to its structure, right, उसका ग्राफ जैसा बन रहा है उसके वजह से. So yeah, so coming back to the parameters, right? So हम जैसे ही j theta function लगाते हैं, okay, we have seen it. So however we have decreased let's say कि ये हमारा x line हमने लिया, ये the same example which we have used in the last lecture, जो लास्ट लेक्चर में मैंने यूज किया, द सेम एग्जांपल इज हियर. लेट्स से दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव
allocated our theta 0 and theta 1 और j theta की वैल्यू, और ये सर्कल्स के सेंटर में पहुंचना मतलब क्या, हम ये सेंटर में हमारे पास क्या है, j theta का हमारा minimum value, right? That the minimum value or the global optima of our j theta is lying at the center, right? So this is the contour plot, if you remember. Okay, this is the contour plot. The single lines represent the this brown line, green line, blue line, navy blue line, and so on. This each and every circle represent the value of j theta. Okay, वो वैल्यू ऑफ जे थीटा बताता है, और उसके रिस्पेक्टिव में हम यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस पे थीटा 0 एंड थीटा 1 देख पा रहे हैं. So this is how your contour plot looks like. This is how it works, right? So हमने यहाँ पे select किया and you are getting this kind of j theta, right? ये वैल्यू यानी we need to reach to the center. Okay, so let's say कि मैं ये हम ये पॉइंट है. Okay, let's say मैंने अपने j theta में डिसेंट एल्गोरिदम का ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम अप्लाई किया. Okay, we updated it, so it will move to that x point to this x point. Okay, this you can see the next x point and the next inner circle. Okay, ये वाला point. I don't know if I am able to use pen. I hope you are able to see. If not, please let me know. Okay, ये वाला x point. You can see the other x point. यहाँ पे x point था, और this is the older one, and वहाँ से हमने gradient descent को अपलोड किया और gradient descent यूज करके उसे अपडेट किया theta 0 and theta 1 को. So it the path move towards here, right? As we are playing. And again, let's say we have updated theta 0 and theta 1. You can see that our x mark is moving towards the center. Okay, we towards the center using that algorithm. Again, next step, next step, next step, next step, next step, and so on. Here we have reached what our global optimal value, जहाँ पे हमारे theta 0, I mean हमारे cost function, theta function, cost function की value minimum है. Okay, it is minimum, right? So this is what this is how your gradient function. This is an example, right? That how your gradient function is working. You can see the line. Okay, line भी कैसे change हो रही है. You can reversing the slides. You can see that कि जैसे ही हम gradient descent algorithm use कर रहे हैं, हम थीटा की values update कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी line अब हम हमारा j theta cost function की value देखो एक साइड एंड एक साइड हमारा line, right? That how it is changing, and even you can see in the graph that this is the optimum value, right? This is the optimum value. You can see, right? This is the optimum value, or what was the line and what is the optimum value now. This was your gradient descent. This was your gradient descent algorithm. Okay, and here we are done with linear regression with single variant. Okay, we are done with linear regression with single variant. Now the next topic will be multivariant, right? So we are done with this part. One more thing which I should tell you guys, inform you guys. I don't know I have talked about in your last lecture or not, but I have created one sheet. I hope I have already discussed with you already, and okay. Okay, now I am sharing this sheet with you guys today. Okay, you will be able to edit it. Okay, and see based on this the stuff you feel here. Okay, the status you provide us here. Based on this only we are going to evaluate you. I'm also sending the link in the chat. I will be mailing it, but I'm also sending the link in the chat. Okay, so then you can access this and you can change it. Okay, you can access it and you can change it. तो आपको ये शीट में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डालना है. उसमें एब्स्ट्रैक्ट में क्या डालना है, आपको अपनी मेथोडोलॉजी डालनी है, डेटा सेट डालना है, रिजल्ट डालना है, पैरामीटर्स डालना है. Okay, and especially this yellow mark people, if please don't change your topic, and if you are changing you need to let us know. Okay, जो भी yellow mark है वो, because these are accepted one. Okay, others need to change the topic, refine the topic and write it here जो भी डिस्कस हुआ है उस हिसाब से. And if there is any change in your groups, okay, except this yellow people, you need to update it here. Okay, I am sharing it. मुझे 2-3 के मेल्स भी आए, so you need to update it by yourself. मैं ये आपको आज ही शेयर कर रहा हूँ.
Just now I am going to share it. So is it understandable what you guys need to do? इसमें Yes, आपको sir. क्या करना है? किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? एंड यू सर नीड टू, ग्रुप नंबर 103 सर आपकी वॉइस कर दे बेटा. सर यूजिंग एनएलपी लिखा है तो वहां पर एनएलपी की जगह जगह पे हमको एमएल करना है. ओके, नॉट एन इशू. हाँ वो. वो आप कर देना, मतलब वो सारे चेंजेस आप कर ओके. देना. ओके, मैं आपको ओके. लिंक भेज ही रहा हूँ. ठीक है, मैंने आपको लिंक भेजी है अभी चैट में भी, बट आई एम ऑल्सो मेलिंग इट टू यू गाइस. ओके, सो यू नीड टू अपडेट इट. और उसमें कोई डाउट, मैंने एक्चुअली लिखा तो हुआ है कि आपको मतलब क्या उसमें करना है. ओके, अभी तक ये इतना एक्सपेक्टेड है मेरे मेरे तरफ से कि आपको इतना करना है. यू नीड टू फिल दिस फर्स्ट टू कॉलम्स बिफोर फोर, राइट. फोर्थ से पहले आपको ये दो कॉलम्स भरने. सर एक्सेस अभी डिनाइड है अभी भी. अरे वो एक मिनट, आई एम जस्ट सेंडिंग यू. आई होप यू आर एबल टू सी द मेल आल्सो. 6 या. सी एस ई, राइट. मैं चैट आपको यहाँ पे भेज देता हूँ. बस एक second. ये लिंक से करो. आई गेस डिनाइड तो नहीं होना चाहिए अब. मैंने जो लिंक भेजी उससे करना. सो मैंने इसकी एक कॉपी भी रख ली है, तो इफ एनीवन इज फीलिंग टू डू सम काइंड ऑफ मिसशिफ, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्ड भी दिखता है किसने एक्सेस किया, किसने क्या अपडेट किया है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसमें कोई फंबलनेस, डोंट फंबल द डेटा, राइट. डू योर वर्क. ओके, just bother with your own row, don't interfere with other rows. So okay, so anyone would like to ask anything इसमें कि सबको क्लियर है इसमें क्या लिखना है? Okay, if not then please give me a call. Okay, majorly times many of you have my WhatsApp me, but I'm not able to reply everyone. I have replied to some. So if you feel that I haven't replied you, please you should make a call to me. Okay, feel free to call to me. Okay, I am not so खड़ूस. आप मुझे फ़ोन करोगे, मैं आपसे अच्छे से ही बात करूँगा. So you can call me. Now, if I am busy, I may not pick your phone. If I am not, I will pick. Right? So don't worry about कि ये टाइम पे सर को फ़ोन करूँ कि ना करूँ. If it's a bit urgent, then please call me. On WhatsApp पे अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो प्लीज़ डू कॉल मी. बाकी मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ मैं सबको WhatsApp पे रिप्लाई दे पाऊँ. But there are a hell lot of messages there, so I'm not able to respond to each and everyone. So I hope you can understand. And if anyone has a doubt, you can still ask, or else we are done with today lectures and we can meet in next lecture. Yes, बोलो. सर अभी भी नहीं हुआ. अभी भी एडिट नहीं हो रहा नहीं नहीं सर, सर. एडिट नहीं हो रहा है. So open नो ही सर, नहीं. इट्स नॉट ओपनिंग. ओपन ही नहीं हो रहा. है? See, right? Anyone in this group with this link? आप अपना कॉलेज का मेल आईडी यूज कर रहे हो? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. पक्का? ओके, चलो एनीवन कर लेते हैं. अब ट्राई करो. अब हो गया, अब हो गया. यानी कॉलेज के मेल आईडी से नहीं कर रहे होगे शायद. नहीं कॉलेज के मेल आईडी से नहीं ही सर, किया. कॉलेज का मेल आईडी था. तो यहाँ पे अनोमस क्यों लिख के आ रहा है? आपका एनरोलमेंट नंबर लिख के आना चाहिए ना. ये देख रहे हो, अनोमस अनोमस लिख के आ रहा है. सर कॉलेज की आईडी है. I guess कोई anyone है इसीलिए, because कॉलेज के आईडी से ही लॉगिन किया है हम. अभी फिर से करता सर. कोई तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं. इट्स फाइन, आप ही लोग. उसमें शायद अंदर कहीं और से डिटेल्स दिखनी होगी. सर मेथोडोलॉजी में क्या लिखना है? हम्म. मेथोडोलॉजी में मेथोडोलॉजी में आपने अभी तक जो भी पेपर्स पढ़ लिए होंगे, राइट, बैकग्राउंड स्टडी कर लिया हो, तो आपने कौन सा मेथड सिलेक्ट किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए? ओके, दैट्स व्हाट. और आपने कौन से डेटा सेट सिलेक्ट किए हैं, और आपके आपने कौन से रिजल्ट देखे आपके, और कैसे पैरामीटर्स आप यूज़ कर रहे हो, राइट. सो यह ये पेपर वाला एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. अभी तक आपने क्या किया उसका एब्स्ट्रैक्ट मांगा है.
कि आप कौन सा मेथोडोलॉजी पे पहुंचे हो यूज़ करने के लिए, आप कौन सा डेटा सेट यूज़ करने वाले हो और उसके रिजल्ट्स कैसे देखे आपने और पैरामीटर्स उसमें क्या होंगे। सर वो डेटा सेट की लिंक देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, सिर्फ नाम, ओके नेम ऑफ द डेटा सेट। सर येलो मतलब और सिलेक्ट सर करना। हाँ, तो मतलब उनके लिए खास अगर वो चेंज करना चाहते हो तो प्लीज़ फर्स्ट कंसर्न विथ मी, उसके बाद ही चेंज करना। ओके सर। सर ग्रुप मेंबर्स के नेम चेंज हुए हो अगर तो? इसमें चेंज कर दो। ओके सर, और ओके। ये रेड वाले खास आज आया है, ये 70 नंबर, अच्छा ये आप में नहीं है ना, 70, 72 एंड 73, पता नहीं कौन है। एंड प्लीज आप कोई शॉर्टिंग या ये मत करना, ओके। आई विल, आप लोग अपनी एंट्री अगर नई क्रिएट करें तो ठीक है, अगर आपकी एंट्री एक भी नहीं है तो, और अंदर ग्रुप मेंबर्स खाली चेंज हुए हैं तो अपने जो चेंज हुए वो खाली अपडेट कर देना वो ग्रुप मेंबर। लेट्स से कि 92 122 अभी कर रहा था, लिख रहा था, तो ऊपर वो उसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं है तो फिर नीचे नई एंट्री देना। अगर ऊपर है ऑल और उसमें आप खाली स्वैप कर रहे हो या चेंज कर रहे हो ग्रुप, तो ऊपर में ही एडिट कर देना अपने एनरोलमेंट नंबर को, राइट। हेलो सर। हम्म। सर हम अगर लास्ट में अगर पूरा मेथोडोलॉजी के साथ में अगर लास्ट में ये फॉर्म फिलअप कर दे चलेगा? नहीं, बिकॉज आई एम मतलब इस मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस कि आप रेगुलरली कितना काम कर रहे हैं। And मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, आपने अगर फेयर में देखा हो तो पार्थ सर खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। क्या ये दिस इज फॉर द पर्पस कि आप लोग कितना कहाँ तक पहुंचे वो हम मॉनिटर कर पाए, देख पाए कि हाँ आप इतना अभी तक कर चुके हो, इतने तक आप पहुंच चुके हो। सर मतलब आज तक कर दे के चलेगा? आज तक मतलब आपको मैंने ऊपर डेट दी है, 4 तक करना है, 4 ओके फरवरी। या ओके सर। सर हम्म। सर मेरा फॉर्म भरा था फिर भी इसमें मेरा डेटा नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इसमें बेटा एंट्री को तो आपने फॉर्म शायद बाद में भरा होगा, लेट जब मैंने निकाल दिया होगा तब। इसमें एंट्री कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। हाँ, यस बस सर, खाली शॉर्टिंग मेरा मत भी करना, ऐसा ही हो शॉर्टिंग रहा मैं है। करूँ, मैं शॉर्टिंग मैं कर दूंगा। आपकी एंट्री नहीं है तो इसमें एंट्री कर दो, क्योंकि एक्चुअली मुझे 3 से 4 ग्रुप का ऐसा मैसेज आया कि उन्होंने फॉर्म फिल किया था बट एंट्री नहीं है। ओके सर, तो फॉर्म फिलअप कर दे, अरे इसमें ही डायरेक्ट इसमें, डाल हाँ देते हैं। इसमें डायरेक्ट अब सर फॉर्म सर फिल कर। लास्ट में ही डाले ना हम? हाँ वो लास्ट में ही डाल, बिफोर 50। हाँ लास्ट में ही डालो। ओके सर। ठीक है, 4th के बाद मैं ये जो फर्स्ट 5 कॉलम्स है वो मैं फ्रीज कर दूंगा, ओके। और ये 123 कहाँ लिख रहा है बेटा, कौन से कॉलम में क्या लिख रहे हो जरा प्लीज देखना आप लोग, मतलब ऐसे ही मत कुछ भी बनना। 54 लाइन में जो एंट्री एंट्री कर रहा है, ऊपर लाइन देख लो कि ऊपर क्या चीज़ का कॉलम है। Okay, so guys, goodbye. We will see you in next lecture. Okay, anyone would like to ask anything? कुछ और पूछना है? नो सर, नो सर डाउट। रिसर्च Okay. पेपर कितने पेज का होना चाहिए? हाँ? रिसर्च पेपर कितने पेज का होना चाहिए? 4 to 6, ज़्यादा होगा उसकी, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 4 पेज। या ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। एक्चुअली पहले तो डिसाइड किया था 11 पेज का, कि वी विल चेक प्लेगरिज्म ऑल्सो, कि आपका कंटेंट कितना प्लेगराइज है। बट अभी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका बर्डन थोड़ा कम कर देते हैं, 4 से 6 पेज का चलेगा, एक्सेप्टेबल लिमिट है वो, उसके ऊपर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ओके ओके सर। सर।
ओके। मैं एक्चुअली अभी मैं मेल में से शेयर नहीं कर रहा हूँ ये लिंक को। मैं 6 CSE 2 का लेक्चर 6 CSE 1 का लेक्चर ले लूँ, आपका 2 का मैंने लेक्चर लिया, उसमें मैं उनके साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं मेल करूँगा। अभी मैंने आपको चैट में भेज दिया, तो आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, ठीक है। तो मैं अभी इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ ये लिंक को अभी, ठीक है। तो प्लीज समवन जस्ट कॉपी इट। ओके सर। मैं मेल बाद में करूँगा, बट एटलीस्ट मैं एक बार ये दूसरे डिवीजन में भी डिस्कस कर लूँ, ठीक है। नहीं तो फिर वो गलत सा एंट्री करना चालू कर देंगे। ओके, सो गुड बाय, सी यू नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।